Hello everyone, welcome to Careerflite. Welcome to another live session of People Development and Environment. And today we are here to discuss about the topic of ecosystem. Okay, we will first discuss what is an ecosystem and then who coined the term ecosystem और उसके बाद different types क्या क्या है ecosystem का. Okay, ये एक बहुत ही important topic है आपका UGC नेट पेपर 1 और बाकी स्लेट के एग्जाम के लिए भी. So first up, if we discuss what is an ecosystem, ecosystem basically is an interaction of the biotic components with the abiotic components in an environment. ठीक है, जितने भी organisms है उनका abiotic component के साथ जो interdependence है that is known as particularly an ecosystem. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे this term ecosystem, this is coined by A.G. Tansley in 1935 and this is very important. Sometimes they ask you these questions like who coined the term ecosystem, who coined the term ecology. So uske basis पर this becomes very important. Next thing is the types of ecosystem. ठीक है, जैसे हम देखेंगे इकोसिस्टम आपका इंटरेक्शन से बनता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का. सो उसके बेसिस पर आप देखोगे ओवर द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम व्हिच एग्जिस्ट एंड सिंपली इफ यू वांट टू डिवाइड फर्स्ट अप इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विच इज द लैंड पार्ट यू कैन से. ठीक है, ये लैंड पार्ट का हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. देन सेकंड वन इज द एक्वाटिक इकोसिस्टम. एक्वाटिक इकोसिस्टम इज एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू वाटर. ठीक है, वाटर से रिलेटेड जो भी इकोसिस्टम है दैट इज योर aquatic ecosystem. And the third one, which is the man-made ecosystem, or you can also say as an artificial ecosystem. The man-made ecosystem तो बहुत ही easier है, which is human-made, mostly the buildings हो, parks हो, bridges हो, these are the man-made ecosystem. But this is not very important in that case. ज़्यादा important आपका terrestrial और aquatic ecosystem है. Okay, terrestrial का division है आपका देखो, that is first one, forest ecosystem. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में किस किस टाइप का फॉरेस्ट आपको मिलता है. फॉरेस्ट रिसोर्सेस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. सो उसके बेसिस पर अगर आप एक ही साथ स्टडी करते हो व्हेन यू स्टडी द इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम देन इट विल बिकम क्लियर. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो. देन कम्स द डेजर्ट इकोसिस्टम, then grassland ecosystem, and then the alpine ecosystem or montane ecosystem. Now remember these things are dependent, all of them are dependent on abiotic components. They are not only dependent but they are interdependent actually. As in the abiotic components they also need different types of organisms ताकि वो भी अपना जो सर्वाइवल है वो कर सके. ठीक है, फॉरेस्ट में अगर हम बोले different types of forest, so you can begin with the tropical evergreen forest. Okay, tropical evergreen forest has a different type of ecosystem. वहाँ पे आपको rainfall annually you will see 200 to 250 centimeter of annual rainfall happens in tropical evergreen rainforest. And the trees present there like rosewood, teak, mahogany, these are the trees which are found in tropical evergreen forest. और यहाँ पे जो trees है they do not shed their leaves throughout the year. पूरे साल में आप देखोगे जो trees है they do not shed their leaves. Okay, so that is known as the tropical evergreen forest. After that, in India, mostly in northeastern parts, then in western ghats, we get the tropical evergreen forest. After that, you will see semi-evergreen forest also exist. That is also kind of similar, but rainfall का amount थोड़ा सा less है. It is 150 to 200 centimeter rainfall annually. एवरेज टेम्परेचर दोनों में आपका 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में एवरेज टेम्परेचर चाहिए ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ओके, देन वी हैव डेसिडुअस फॉरेस्ट. दिस इज आवर नेक्स्ट टाइप. डेसिडुअस फॉरेस्ट आपका दूसरा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जहां पे आप देखोगे 6 मंथ्स जो लीव्स है वो शेड करते हैं ट्रीज एंड 6 मंथ उनका लीव्स प्रॉपर्ली रहता है. Okay, in one season they shed their leaves. So here rainfall is probably 100 to 150 centimeter of rainfall annually. Okay, and average temperature you require from 21 degrees Celsius to 26 degree Celsius or 27 degrees Celsius also sometimes. Okay, so this is about the forest ecosystem. Forest ecosystem में आपको दिखेगा एनिमल्स पर्टिकुलरली टाइगर, लायन एंड डिफरेंट स्पीसीज आपको दिख सकता है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ओके, वर्ल्ड वाइज अमेज़न इज द बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट इन वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट है डेजर्ट. डेजर्ट इकोसिस्टम आपको पता है इट्स डिफरेंट. जो ट्रीज वहां पे होते हैं दे आर स्पेशली डिजाइंड टू एब्सॉर्ब मोर एंड मोर वाटर. ओके, सो द वेजिटेशन दैट यू विल गेट प्रोबेबली विल कंटेन थॉर्न्स. ठीक है, जिन पर ज्यादा कांटे हो ताकि वाटर जो है वो बाहर ज्यादा ना निकले, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा ना हो. एंड द लीव्स मोस्टली आर वैक्सी.
सब्सटेंस जो है वो वाक से होता है. सो कैक्टस, मोर एंड मोर ऑफ कैक्टस यू विल सी देयर, which are built up in that way only to survive in that ecosystem. ठीक है. So desert ecosystem में आपका rainfall आपको 16 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल आपको दिखेगा, which is very less in compared to tropical evergreen rainforest. Okay. Next up is grassland. In grassland ecosystem what happens, बारिश तो है but it is not that much कि trees हो वहाँ पे, but you will see large grasses there. Okay. Savanna is one of the important grassland over the world which exist in Africa. Okay. So इस तरीके से grassland ecosystem एक तरीके का ecosystem है. Next up, alpine ecosystem. Now this alpine ecosystem we get in mountains. अब mountains का भी ecosystem आपका different है, where the land is like permanently frozen, sometimes it is permanently frozen. तो वहाँ पे आपका mosses, lichens, this type of vegetation you will see. Then another type of ecosystem also exists in alpine, which is the montane. The montane is where downside माउंटेन्स के जो नीचे का पोर्शन है वहां पे जो आपको वेजिटेशन मिले, दैट इज पर्टिकुलरली कोनिफेरस फॉरेस्ट, देन पाइन ट्रीज, फर ट्रीज, इसका इकोसिस्टम भी आपका फिर से डिफरेंट बनता है. ओके. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. देन नेक्स्ट अप एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमको दो टाइप्स का मिलता है, वन इज फ्रेश वाटर, अनदर वन इज मैरिन. नाउ दिस ecosystem depends upon the salinity of water. ठीक है. Salinity means the quantity of salt in present in water. Now this is measured in parts per thousand. Like in 1000 gram, how many grams of salts are present there? So इसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं whether it is fresh water or whether it is marine. Okay. Fresh water में आपका 35 parts per thousand से नीचे होगा, and marine में आपका 35 parts per thousand से above होगा. That means this is very saline. So this is our marine ecosystem. And freshwater ecosystem के जो fish वगैरह है, these are different than marine ecosystem mostly. So this is about your aquatic ecosystem. The last one is your man-made ecosystem. So ये एक simple classification था just आपका of about different ecosystem, और उसके बेसिस पर आपको थोड़ा डिटेल स्टडी करना है. दिस इज जस्ट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द थिंग्स लाइक हु कॉइन्ड इट, कितने टाइप्स में आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो. And now the detailed thing that you can see is about the temperature, exact temperature क्या है, exact rainfall कितना चाहिए, उसके वाइज vegetation क्या क्या है, exact vegetation क्या क्या है, that you can go through. अभी जो मैंने वीडियो में बोला है आप वो भी नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है then you can give one like, and you can also comment for our channel Careerflite. और Careerflite का ऐप भी है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो. From there you can get lot of contents and all, okay, which will help you in the exam further. और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो. And thanks for watching.